Hey guys, welcome back to my new video. In this video, I will be sharing the simplest way of making a CV to apply for Qatar Airways interview. So guys, this is a fresher CV and a resume. Please don't make so much hosh posh. Don't make so much cures because I was getting n number of messages, sir, kaise banana hai, kya kar rahe hain, and so on, so and forth, right? So please understand that it is the simplest way. The way I will tell you, please go for that. Do not get puzzled here and there, because उसी से ही मैंने कतर एयरवेज के लिए इंटरव्यू के लिए अपनी सीवी बनाया था एंड आई गॉट सिलेक्टेड एज वेल. ये तो आपका ऑनलाइन सेशंस है, मेरा फिजिकल था जब मैं दिल्ली में गया था, तो आई गॉट सिलेक्टेड थ्रू दैट सीवी. एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल आल्सो शेयर दैट पर्टिकुलर सीवी थ्रू विच यू विल अंडरस्टैंड हाँ ये सच्ची में सिलेक्शन हुई है, राइट? सो गाइज, बहुत से टेम्पलेट्स मिलेंगे, बहुत चीजें आपको शो करूंगा. सो प्लीज वॉच इट वेरी माइन्यूटली बिकॉज दिस इज द स्पेशल रिक्वेस्ट, बिकॉज मुझे बहुत लोगों के मैसेज आए सीरियसली, बट आई एम सो हैप्पी दैट यस पीपल आर रियली ट्रस्टिंग ऑन मी एंड शोइंग सम फेथ. सो गाइज, let's not waste the time and let's jump to the section which is the most important, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है. And one more thing, if you're liking my hard work and liking the content, please share this video and also subscribe this channel. कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं जाएगा आपका. It will give me a boost. Right now let's jump to that particular section. गाइस, पहले इस चीज़ को अपने सिर्फ लैपटॉप पे ही करना है या आप किसी भी कैफ़े में जा सकते हैं, राइट? आपको क्या करना है, आपको न्यू डॉक्यूमेंट नहीं खोलना, आपको ओपन करना है वर्ड डॉक्यूमेंट एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट द न्यू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. देन आपके पास बहुत टेम्पलेट्स होंगे जो आप यूज़ कर सकते हैं. मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल शो यू द पैटर्न, द टेम्पलेट विच आई हैव यूज्ड फॉर माई कतर एयरवेज interview and I got selected too. So please use that template if you want to, but now in this video I will show you the simple one. मैं आपको बताऊंगा कैसे एडिट करना है सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू गाइज, राइट? वैसे बहुत टेम्पलेट्स है, आप कोई भी टेम्पलेट यूज कर सकते हैं फॉर योर एज पर योर टेस्ट, एज पर योर कंफर्ट, एज पर योर लाइकिंग. सो द वन आई विल बी यूजिंग इन दिस वीडियो वुड बी द सिंपल वन. सो डोंट जज, मैं सिंपल बता रहा हूँ बट आपको मैं बताने लगा हूँ कि कैसे करना है, राइट? सो दिस इज अ वन विच विल बी यूजिंग एंड जस्ट क्रिएट पे क्लिक करना है. फर्स्ट नेम अपना नाम भरिए, देन यू जस्ट हैव टू पुट द लास्ट नेम एज वेल. नीचे आपका एड्रेस आ जाएगा एंड फ़ोन नंबर आ जाएगा, राइट? अभी हम इस कॉलम में अपना ईमेल भरेंगे. नाउ वी विल ऐड हमारा जो कैरियर ऑब्जेक्टिव है. सो गाइज, अपने कैरियर ऑब्जेक्टिव को सर्च कर सकते हो गूगल पे, आपको इतना बनाने की जरूरत नहीं है बिकॉज यूर अ फ्रेशर. बट जो भी आप लिखोगे यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर राइटिंग, राइट? सो प्लीज़ ऐसे ही मत लिख देना कुछ भी. आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ हमने कैसे ढूंढना है. यू हैव टू सर्च कैरियर ऑब्जेक्टिव फॉर अ फ्रेशर, देन यू जस्ट नीड टू स्क्रॉल डाउन एंड जस्ट सी एज पर योर टेस्ट, राइट? मैं इसमें चूज़ कर लेता हूँ दिस वन, द फर्स्ट वन, टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स मी एन एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ टू एनहांस माई स्किल्स एंड नॉलेज अलॉन्ग विथ कॉन्ट्रीब्यूटिंग एंड ऑल दैट. सो इसमें मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ अभी, राइट? वंस यू डू दैट देन इट कम्स, आप थोड़ा सा फॉर्मेट कर लीजिए किस उसमें रखना है, सो आपको ईजी हो जाएगा. थोड़ा अपना पंगे लेने का ट्राई करना, अपने आप को इसको इम्प्रूव करना, राइट? नाउ लेट्स जम्प टू द एक्सपीरियंस. आप उसको डिलीट कर दो बिकॉज आई डोंट थिंक सो एक्सपीरियंस जिसके भी जो भी फ्रेशर्स हैं उनके पास होगा. सो डोंट राइट दीज थिंग्स. अगर आपने कुछ वैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की है वो मैं आपको बताऊंगा कैसे रखना है. नाउ जम्प टू एजुकेशन पार्ट. एजुकेशन में अपना स्टार्टिंग में अपना डिग्री की है तो ग्रेजुएशन लिख दीजिए ऊपर, राइट? पहले डे लिख दीजिए, मंथ लिख दीजिए, देन ईयर लिख दीजिए डाउनवर्ड्स. इफ़ यू गो, आपने क्या किया हुआ है, फॉर एग्जांपल आई हैव डन होटल मैनेजमेंट और डिग्री की है, ग्रेजुएशन की है, राइट? सो उसके बाद आपने कहाँ से की है, HCMI से की है, दिस इज़ माई यूनिवर्सिटी नेम. देन इसमें आप अपनी ओवरऑल परसेंटेज बता दो, CGPA है CGPA बता दो, ओवरऑल परसेंटेज है तो ओवरऑल परसेंटेज बता दो, राइट? सेम गोज फॉर द सेकेंड वन. इसमें नीचे वाले में भी सेम कर दीजिए. 12th भर दीजिए, 10th भरने की ज़रूरत नहीं है, भरना है तो वो भी भर दीजिए, नो प्रॉब्लम, बट इट शुड बी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट? पहले आपका वो आ गया ग्रेजुएशन, देन 12th एंड देन इट गोज टू 10th. आपने 10th भरना है तो भरिए, नहीं तो इट्स योर विश, राइट?
गाइस फॉर फ्रेशर जस्ट एग्जांपल आपको बता सकता हूँ, गूगल पे आप सर्च कर सकते हो अच्छे अच्छे, राइट। सो आप स्किल्स पता लग सकते हैं आपको जस्ट फॉर फ्रेशर्स, बिकॉज कभी कभी बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। देन सी व्हाट इज गुड एट यू, गुड ऑन यू, व्हाट इज सूटिंग यू, राइट। सो लाइक पंचुअलिटी हो गया, हार्ड वर्कर हो गया, टीम वर्कर हो गया, राइट। सो दीज आर द थिंग्स, इंस्टेंट डिसीजन मेकर हो गया एंड पंचुअलिटी, राइट। सो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो गूगल कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं है उसमें। सो गाइस नेक्स्ट ऑप्शन इज एक्टिविटीज़। फ्रेशर्स के लिए एक्टिविटीज़ इज़ अ मेन इंपॉर्टेंट ऑप्शन, राइट। इसमें आपने कुछ भी किया है, फॉर एग्जांपल आपने कोई क्रिकेट में कोई मैच खेला है, राइट। आपने किसी टीम को लीड किया है, आपने कुछ ऐसा किया है जिससे यू कैन से दैट यस यू हैव लेड द टीम, जिसमें टीम लीडरशिप की क्वालिटी आ जाती है, राइट। ऑल्सो यू कैन ऐड किसी पोर्ट्रेट कोई कॉम्पिटिशन जीता है, मीन्स यू आर वेरी क्रिएटिव, राइट। आपने कुछ ऐसी चीज़ की है जिस चीज़ को लीड किया है टीम को अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स, right? So these are the things which can help you, the person they'll come to know, yes, this is a very interesting person, this person has that ability to lead the team, right? So these are the things to be written in activities. It is must for those people who are freshers, who have not done anything yet in their life, due to they have just passed a graduation or 12th. Moreover, you can also add those things like आपने कोई भांगड़ा, आपने कोई डांस में कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है. So these are the things which makes creative person and keeps a person different from others. So now let's jump into the section that is personal details, right? Personal details में क्या important है? That is date of birth, name उनको वैसे ही पता है, आपका email ID पता है, आपका address पता है, so no need to mention again. Date of birth, father's name, mother's name, languages known which are very important, like I am good at English, I am good at Punjabi and Hindi as well. अगर आप मराठी हो, कुछ भी हो, so obviously you can write those languages as well. Interest क्या है आपके? You are क्रिकेट प्लेयर, यू हैव प्लेड क्रिकेट, इसमें आप क्रिकेट लिख दो, रीडिंग लिख दो, लिसनिंग टू सॉन्ग. सो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. So guys, now at the end we will add declaration. Declaration मतलब आप declare कर रहे हो जो भी above information written है, जो भी हमने लिखा है, that is absolutely correct, right? So here what I have written, I hereby declare that the information furnished above is true as per my knowledge. मतलब जो भी information मैंने ऊपर लिखी है, that is absolutely correct as per my knowledge. If something goes wrong, I will be liable to answer that, right? सो नाउ गाइज लेट्स फर्निश इट एवरीथिंग. रिफाइन करते हैं एक बार, हम देखते हैं कहीं हमें फॉन्ट चेंज तो नहीं करना, हमें कुछ चीज़ को फॉर्मेट तो नहीं करना, हमें कोई कॉपी पेस्ट तो नहीं करना. वी विल चेक द स्पेलिंग्स वंस, वी विल चेक द कलर फॉर्मेशन. अब सब कुछ सिमिलर है, अच्छा लग रहा है, कुछ गंदा तो नहीं लग रहा, right? So we will see everything is written in the proper sequence, सब alignment proper है. So this is why we have to cross check once what we have made, right? मैंने बड़ी चीज़ें change करने की try की थी, but I never wanted to change because this is the simplest one I have used. And if you want to see the different one, I am just showing you about after this the one which I used for the Qatar, and I have used from this Word document only, right? So everything works quite well.